May I request the Chief Guest, the Honorable President of India, and other dignitaries on the dais to light the lamp on this auspicious occasion. The students of the IPM Batch 1 will now offer a rendition of the Saraswati Vandana. Ma Saraswati Sharde, Ma Saraswati Sharde, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे. Thank you, students. On behalf of IIM Jammu, may I request Dr. Milind Kambleji, Chairman, Board of Governors, IIM Jammu, to kindly preside over the function and formally announce the opening of the convocation. I declare the convocation 2022 open. Thank you very much, sir. I invite the Chairman, Board of Governors, to kindly deliver the welcome address. Shri Ramnath Kovind ji, the Honorable President of India, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Minister of State, Government of India, Shri Manoj Sinha ji, Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, members of the Board of Governors of IIM Jammu, Professor B.S. Sahai, Dr.
Director IIM Jammu, distinguished guests, faculty and staff, parents, friends from the media and my dear graduating students. It gives me immense pleasure to welcome the Honorable President of our nation, Shri Ramnath Kovind ji, at IIM Jammu on this auspicious day. Sir, I would like to thank you for accepting our invitation to deliver the 5th convocation address despite your busy schedule. I am glad to welcome Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, Government of India on this auspicious occasion and wish to thank him for his continuous support to IIM Jammu. I am thankful to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, for gracing the occasion with his august presence and for all the cooperation in establishing IIM Jammu. I would also like to welcome the members of BOG for their presence and their guidance. I also extend a warm welcome to the distinguished guests from the government, corporate sector, academia and media. It is heartening to see that IIM Jammu is making rapid strides and has earned an outstanding reputation in such a short span of time. The institute has already created benchmark for MBA, PhD, IPM and executive MBA programs and expanding its academic horizon by introducing programs such as dual degree, that is a BTech plus MBA with IIT Jammu and MBA in hospital administration and healthcare management jointly with AIIMS Jammu and IIT Jammu. IIM Jammu has also started Anandam, the Happiness Center. The institute has shown great resilience in managing its resources during the pandemic and turn it into an opportunity for growth and learning. The institute transitioned smoothly to online teaching with no disruption to the academic activity. I would like to congratulate Professor B.S. Sahai, Director IIM Jammu and his team for such remarkable achievement and growth of the institute in such a short span of time. IIM Jammu is one of the 9th IIM currently involved in implementing the Mahatma Gandhi National Fellowship under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. The National Education Policy 2020 is a landmark transformative initiative of the Government of India to address the issue of Indian education system. I feel happy to inform that we at IIM Jammu have aligned our academic programs as per the NEP 2020. Our aim to develop leaders and entrepreneurs who can perform globally to make a sustainable difference to society and the corporate world. The institute has proved a conducive environment for nurturing talent, excellence and innovation through global tie-ups which have given the students and faculty the much needed opportunities for sharing experiences and adopting global academic practices. I feel happy to inform that this year the response of industry has been excellent. Our students have been able to secure good placement with a hike in the average package by 31%. I wish to thank all our industry partners for their continuous support. Apart from these long-term programs, IIM Jammu is also conducting management development programs, entrepreneurship programs and faculty development programs for faculty and students of IIM Jammu and thereby catering to the developmental requirements of this region and our nation. The state-of-art campus of IIM Jammu is being constructed at Jagti. I feel happy to inform that we will be moving to our permanent campus by end of this year. We have also started off-campus of the institute at Srinagar. Construction of the off-campus at Srinagar will start soon. We have set up 2 centers of innovation and entrepreneurship, one at Srinagar and another at Jammu.
We are committed to the growth and development of Union Territory of Jammu and Kashmir. I hope that these centers will bring youth of Jammu and Kashmir in the mainstream. My dear students, I am extremely happy to see that you have achieved a major milestone in your life and are graduating today. Heartiest congratulations for your significant achievement. My dear students, the 21st century business landscape is a knowledge-based, driven by data and information. A key factor ensuring success in such a challenging situation is adaptability or preparedness. As young corporate leaders overcome challenges with a smile and courage. My dear students, the country has high expectations from you. It is your duty to place the nation's interest first and work constantly for the upliftment of the poor and the underprivileged. Once again, I extend my hearty congratulations to the graduating students and your parents on this happy occasion. On behalf of the Board of Governors of IIM Jammu, I wish you a grand success, prosperity and happiness in your life. Jai Hind. Thank you, sir, for your very thoughtful comments. May I now request the Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Chief Guest, Sri Ramnath Kovind, the Honorable President of India, by presenting a memento and shawl. May I request the Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Guest of Honor, Dr. Jitendra Singh, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, by presenting a memento and shawl. May I again request Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Guest of Honor, Shri Manoj Sinha, Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, by presenting a memento and shawl. May I now request Professor B.S. Sahai, Director, IIM Jammu, to felicitate the Chairman, Board of Governors, IIM Jammu, by presenting a memento and shawl. I now invite the Director, IIM Jammu, to kindly present the highlights of the Director's report. The Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Government of India, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha ji, Chairman IIM Jammu, Dr. Milind Kamble ji, members of the Board of Governors, distinguished guests, my colleagues, parents, media members, and my dear students. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you on 5th annual convocation. We are extremely privileged to have among us the first citizen of the nation, Honorable President, who has kindly consented to be the chief guest and humbly agreed to deliver the convocation address. Sir,
On behalf of IIM Jammu community, I extend a very warm welcome to you. I am honored to welcome Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State. Sir, you are a constant source of encouragement for IIM Jammu. I am honored to welcome Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, for continued support and guidance to IIM Jammu. Let me welcome our Chairman, Dr. Milind Kamble Ji, who has been a constant source of inspiration, strength and support to IIM Jammu. I also heartily welcome the esteemed members of the Board of Governors for their guidance and support. Despite the pandemic, we have marched steadily towards our vision. I have great pleasure in presenting the highlights of our achievement. MBA is the flagship program of IIM Jammu. Today, 214 students are graduating. In accordance with the National Education Policy, IIM Jammu started two unique programs. First, dual degree program, that is BTech plus MBA with IIT Jammu, and second, MBA in Hospital Administration and Healthcare Management, jointly with AIIMS Jammu and IIT Jammu. In addition to our existing PhD, Executive MBA, and 5-year integrated program in management. Our faculty members continue to sign and have published more than 50 research papers in top-ranked journals. IIM Jammu also set up Anandam, the Center for Happiness. We have made happiness as a compulsory course to all our programs. Now, I would like to share my feelings with our graduating students on this significant milestone in their lives. My dear students, I am extremely happy to see all of you completing a significant milestone in your life. I am sure your hard work, your dedication, and your sincerity will make you an excellent citizen and a global leader. I am confident that you will always remember your responsibility towards the nation and to serve the mankind and the society. I wish all the very best in your professional and personal life. May God bless you in all your future endeavor. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. All the graduating MBA students may now rise. May I request the Director, IIM Jammu, to present all the graduating students for the award of the MBA degree and administer the oath. Sir, I present 4 students from batch 2019-21 and 210 students from batch 2020-22 of MBA, and request the Chairman, Board of Governors of the Indian Institute of Management, Jammu, to confer degree to them. By virtue of the authority vested in me as the Chairman of the Board of Governors of this institute, I confer on you the Master of Business Administration degree of Indian Institute of Management, Jammu, and I charge you that in your life, by words and deed, you prove yourself worthy of it. Now graduating students will take oath. Place your right hand on your heart and place this oath in your own presence. Repeat the oath after me. I having qualified for the Master in Business Administration from the Indian Institute of Management, Jammu, do solemnly take an oath that to the best of my ability, knowledge and judgment, I will be true to the learnings at IIM Jammu. In that, I will utilize all available resources to achieve
sustainable development and growth of my nation, society, organization, and all stakeholders in accordance with rule of law, uphold the principles of ethics and practice tenets of good governance. Thank you, sir. May I now request the Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, to deliver his address. भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रख रहे सभी ग्रेजुएट्स, IIM के सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, देवियों तथा सज्जनों, मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो जम्मू शहर मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसे शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया है। देश का अकेला शहर है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM और एम्स, ये 4 प्रतिष्ठित संस्थाएं जम्मू में हैं। ये गौरव देश के किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं। टीचर्स, यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स तथा IIM जम्मू के 5वें बैच के MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। आज इस कन्वोकेशन में उपस्थित होना आपके समर्पण, सच्चे प्रयास और सामर्थ्य का प्रतीक है। दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विद्यार्थियों के जीवन में और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सौंपने का दिन भी होता है। IIM जम्मू ने जिस प्रकार ज्ञान की शक्ति के साथ जिम्मेदार नागरिक की भावना का आपके अंदर निर्माण किया है, अब उसी भावना के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपको अपनी जिम्मेदारियां आने वाले समय में निभानी है। आपके टीचर्स के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञान की शक्ति के रूप में भविष्य की आधारशिला का निर्माण किया है और उन्हें आपसे उम्मीद है कि आगे चलकर सकारात्मक सामाजिक आर्थिक विकास में आप सभी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, आज से आपके लिए IIM कैंपस के बाहर एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गुरु तथा शिष्य के बीच ये संबंध जीवन पर्यंत का होता है। हमारे उपनिषदों में भी एक बात कही गई है, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्च समः। गुरु तथा शिष्य दोनों के विद्या ब्रह्म तेज में वृद्धि हो तथा उनका यश, उनकी प्रसिद्धि एक साथ संसार में फैले, यही जीवन का मूल मंत्र होता है और यही नैतिक दायित्व भी। जब भी शिक्षा में नैतिक मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब आर्थिक विकास के साथ वास्तविक सामाजिक विकास भी होता है। मुझे हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी
केवल पुरुषों और नारियों को प्रोफेशनल बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे उच्च चरित्र, ईमानदार और सम्मानित व्यक्तियों के रूप में तैयार करना है जो अपने आचरण से दुनिया को ये दिखाएं कि वे एक महान इंस्टीट्यूशन से निकले। मैं मानता हूं कि विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में समाज के तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अनेक सूत्र दिए हैं। कुछ का अगर मैं जिक्र करूं, बिजनेस एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन, नए बिजनेस आइडियाज, रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन जिस एक सूत्र को समझना आवश्यक है वो ये है कि व्यवसाय से जुड़े प्राकृतिक नियमों का संगठित ज्ञान। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे भरोसा है IIM कैंपस से बाहर निकलकर चाणक्य के ये शब्द आपको अवश्य स्मरण रहेंगे और आप सभी अपने कैरियर को सिर्फ नौकरी की तरह नहीं बल्कि भारतवर्ष की नियति को तय करने वाले मिशन की तरह लेकर काम करेंगे। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण विषय संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, अभी मेरे पूर्व भी जिक्र हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी ने, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के शिक्षण संस्थाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है। हमारा ह्यूमन कैपिटल विश्व स्तरीय हो तथा नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हो। और एजुकेशन पॉलिसी जिन मूल्यों की बात करती है उसका सीधा मतलब है कि हर छात्र अपनी गरिमा, हर छात्र की अपनी गरिमा है, अपना गौरव है और हर छात्र अपने में अद्भुत है। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वह सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छुए, ताकि हर बच्चा सिर्फ प्रतिस्पर्धा, सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसे एक ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता का मतलब सिर्फ मेडल प्लेसमेंट तक सीमित न हो बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी हो। मैं ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल के आंकड़े देख रहा था और आप सबको पता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हमारे देश से निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये सही समय है जब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान में जो शिक्षण संस्थान ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो वैश्विक बाजार की मांग के मुताबिक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और मार्केट की डिमांड के बीच गैप बढ़ रहा है? आज ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। हमने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं जो इस खाई को भर सकेगा? जैसा मेरे पूर्व भी चेयरमैन साहब ने कहा, आज विश्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तन लाना ही होगा। जो टॉप 3 स्किल सेट की जरूरत सभी ग्रेजुएट्स को होगी, उसमें मैनेजिंग स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, मैनेजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तथा इंटरपर्सनल स्किल ये अनिवार्य हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी इनोवेशन सिस्टम के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक विकास को बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। आपको इनोवेशन के माध्यम से ज्ञान को धन में परिवर्तित करना होगा, कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू वेल्थ। परिवर्तन आज इतनी तेजी से हो रहा है कि आज का इनोवेशन कल के लिए पास्ट हो जा रहा है। मुझे याद है प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने देश के मेघनाथ साहा की एक बड़ी छोटी कहानी है उनके जीवन की। वो अक्सर क्लास में पढ़ाते थे और 4-5 दिन एक ही सवाल पूछते थे। एक विद्यार्थी बड़ा हैरान हुआ और उसने उनसे एक सवाल किया कि एक ही सवाल पूछने का औचित्य क्या है। इस पर मेघनाथ साहा जी ने जो कहा कि सवाल तो वही है, लेकिन इसका कल जो जवाब था वो आज बदल गया है। अभी मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से चर्चा कर रहा था इसी तरह की बात, मैं उस संदर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, उन्होंने भी की है। आज के डिजिटल इकोनॉमी का यही मूल मंत्र है। आपको पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे और मैं समझता हूं कि कोरोना की 3 लहरों के बाद जो न्यू नॉर्मल वर्ल्ड बना है उसमें भी हर साल अपस्किलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके लिए MBA के एकेडमिक तथा कॉरपोरेट के व्यवहारिक वातावरण के बीच गहरे तालमेल की जरूरत होगी। मैं सभी अध्यापकों से
विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि पढ़ाई सिर्फ कोर्स के आधार पर हो, आज ये जरूरी नहीं है, बल्कि बाजार के मुताबिक भी हो, ये आवश्यक हो गया है। नौजवान साथियों, अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को ज्ञान तथा उद्योग की शक्ति बनाने के लिए कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समन्वित कार्रवाई की गई है। आजादी के बाद से आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर को बिना छुए ही निकल गया था। 70 सालों में जम्मू कश्मीर में महज 15,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन जो नई पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बनवाई, उसमें आज की तारीख में 52,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास हैं। अभी पिछले दिनों 24 अप्रैल को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहीं जम्मू के बगल में की थी। फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, अनेक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। मैं समझता हूं कि ये समानता पर आधारित न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था के नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। जम्मू कश्मीर के इस तेजी से हो रहे विकास में मैं आप सभी भविष्य के मैनेजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूं। आप सभी को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने, नए विकसित हो रहे बाजारों में जम्मू कश्मीर का हिस्सा बढ़ाने, नई तकनीक के विकास और प्रबंधन जैसे अनेक चुनौतियां मिलेंगी, जिन्हें आपकी मेहनत और संकल्प से पूरा किया जा सकेगा। और ये आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का सामूहिक स्वप्न भी साकार करने का दायित्व आपके कंधों पर है। आज भारत विश्व में सबसे तेज डीजीपी रजिस्टर करने वाला देश है और हम आत्मनिर्भरता के मुहाने पर खड़े हैं, जहां चुनौतियों के साथ सभी सेक्टर्स के लिए असीम अवसर भी उपलब्ध हैं। इस ग्रोथ को अस्थायी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम सच्चे समावेशी विकास की भावना से काम करें, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित हमारे भाई बहनों को लाभ हो। IIM जम्मू तथा होनहार मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए आवश्यक है कि आज के नए इनोवेशन, नई कार्य पद्धति, वंचित वर्ग के कल्याण को ध्यान में रख करके काम किया जाए। मैं IIM जम्मू के प्रोफेसर सहाय, उनकी पूरी टीम और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस काम में अग्रणी भूमिका निभाई है। एक बार पुनः मैं आप सभी को बधाई एवं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान में अपनी महती भूमिका का योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request the Honorable Union Minister of State, Independent Charge, to deliver his address. महामहिम राष्ट्रपति जी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और हमारे मित्र मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर मिलिंद, डायरेक्टर BK सहाय, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी और आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण जिनको ये डिग्रियां ग्रहण हो रही हैं, जिनके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है राष्ट्रपति जी का कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके हमारे बीच में। और ये बात मैं इसलिए भी कहने का साहस कर रहा हूं कि कुछ समय पहले जब डॉक्टर साहब ने मुझसे ये सुझाव किया कि उनकी इच्छा है कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया जाए, तो सच पूछिए तो मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। एंड आई होप प्रोफेसर साहब विल फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि इतने वर्षों से दिल्ली में रहते हुए मुझे लगा कि नामालूम
राष्ट्रपति जी के पद और उनके मर्यादा के कितना पद अनुकूल रहे कि मात्र एक दीक्षांत समारोह के लिए वो जम्मू आए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनका उत्साह कम हो, तो मैंने ये कहा कि ऐसा कुछ योजना बनाते हैं, कोई और भी बड़ा कार्यक्रम हो जम्मू में और साथ में ये भी जोड़ा जाए। और प्रिसाइसली यही बात मैंने राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरी साहब के आगे भी रखी। नाउ लुकिंग बैक आई हैव टू टेक बैक माई वर्ड्स, और मुझे आभार भी प्रकट करना है, और यही राष्ट्रपति जी के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि वहीं से संदेश आया कि वो चाहेंगे वो जम्मू जाकर के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहें। और ये प्रमाण है इस बात का भी कि जिस प्रकार से आप भारत के युवाओं को, भारत के शिक्षकों को प्राथमिकता देते हैं, और स्वाभाविक है कि आप स्वयं भी बुद्धिजीवी भी हैं, लेखक भी हैं, स्कॉलर भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद धरती से भी जुड़े हुए हैं, और उन इस सारे मिश्रण का दृश्य इस समारोह में देखने को मिल रहा। जहां तक आईआईएम जम्मू का संबंध है, बहुत आगे विषय में ना जाते हुए मात्र यहीं तक सीमित रखते हुए आईआईएम तक देखा जाए तो ये संस्थान कोई बहुत पुराना नहीं है, और भारतवर्ष में आईआईएम्स की बिरादरी में अगर इसकी बाकी आईआईएम्स के साथ तुलना की जाए तो ये बहुत कम उम्र निकलेगा, मुश्किल से 4-5 वर्ष पुराना। परंतु इसकी विशेषता यह है कि थोड़े ही समय में इसने भारत के श्रेष्ठ आईआईएम्स की श्रेणी में स्थान ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की, और प्रतिवर्ष जो इस विषय को लेकर के सर्वे प्रकाशित होते हैं उसमें ये दर्शाया भी गया। मेरा सौभाग्य कि मैं प्रारंभ से इस आईआईएम के साथ जुड़ा हूं, उस दिन से जब कि नींव का पत्थर रखा गया था, शायद साहे साहब के आने से भी पहले से, और आज तक। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोई कार्यक्रम हो, समारोह हो, चाहे वो पासिंग आउट हो, वो बड़े अधिकार के साथ मुझे स्मरण करते हैं। एक बात शायद हमारे ध्यान में आती है कि नहीं, कि आईआईएम जम्मू की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2 महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने का काम कर रहा है। एक तो नई शिक्षा नीति, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईसी 2020 कहा जाता है, और दूसरा स्टार्टअप्स मूवमेंट, जो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जुड़ी है। और इन दोनों का विषयों का संबंध बड़ा निकट का आईआईएम के साथ है। जहां तक एनईसी 2020 का संबंध है, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी ने इस बात पर विचार किया कि एप्टीट्यूड्स को प्राथमिकता दी जाए। अदरवाइज इन द पास्ट एप्टीट्यूड वाज ऑफन द कैजुअलिटी, सो वी बिकेम मोर ऑफ कैरियरिस्ट एंड क्रैकर्स ऑफ द एग्जाम। एंड लिबर्टी टू चेंज, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा विस्तृत रूप में, एग्जिट एंट्री का प्रावधान, आप बीच में कोर्स छोड़ भी सकते हैं, कुछ और प्रयोग करके यदि आपको लगे वापस आना तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप अपने विषय मजमून बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उस ट्रांजिशन दौर देखा है। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनको स्मरण होगा कि हमारे ज़माने में एक बड़ा प्रसिद्ध संज्ञा हुआ करती थी, ड्रॉप आउट। जो पूछो साहब क्या, तो बोलता था मैं 11वीं का ड्रॉप आउट हूं। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के बाद ड्रॉप आउट की संख्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यू कैन ड्रॉप आउट एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप बैक। इस बात का जब तक हम इतनी शिद्दत से एहसास नहीं करेंगे तब तक हम इस शिक्षा नीति का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। एंड दी प्रेसिडेंस टू स्किल ओवर डिग्री, बहुत समय से यह विचार पकड़ किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा लिंकेज हो गई है हमारी शिक्षा की डिग्री के साथ, लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इत्तेफाक से वो डॉक्टर हैं, माइक्रोबायोलॉजी के टीचर। जब दिल्ली आते हैं तो स्नेहपूर्वक कभी कभी बुला लेते हैं, तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ऑल माई PhD फ्रॉम इंडिया। और अगर भारतीय मूल के छात्र ना आए तो मेरा PhD बंद हो जाए।
तो जब वो उठ के चले गए तो मेरे साथ जो बैठे थे, मैंने कहा ये महानुभाव जो कह गए वॉज इट अ कॉम्प्लीमेंट और अदरवाइज? बोले आपका क्या मतलब? मैंने कहा ये महानुभाव नहीं जानते कि इंग्लिस्तान में कोई पीएचडी करने तभी जाएगा जब उसने ये निर्णय कर लिया हो कि बाकी का सारा जीवन समर्पित कर देना है उसी विषय को, शोध में, रिसर्च में, खोज में। हमारे यहाँ पीएचडी इज अ ट्रॉफी। आप पीएचडी कंप्यूटर में लेकर आइए, नौकरी बायोटेक्नोलॉजी में कर लीजिए। और उसका नतीजा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य जो हम देखते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी, और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इसका मिश्रण किया गया है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, दैट इज गोइंग टू एड्रेस दिस इशू टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और साथ ही साथ जुड़ गया स्टार्टअप्स का। आपको स्मरण होगा प्रधानमंत्री ने 2015 में लाल किले के परिसर से कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ना मालूम कितनी गंभीरता से वो बात सुनी गई, लेकिन आज उसी आह्वान के उपरांत इतनी तेज गति से इस मुहिम ने जोर पकड़ा है कि जहां सरकार बनने से पहले 2014 में देश में मात्र 300-400 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज बढ़कर के उनकी संख्या 70,000 हो चुकी है। यूनिकॉर्न में हम 100 का आंकड़ा पार कर गए। और भौगोलिक स्तर पर भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे दर्जे पर है। मुझे लग रहा है यदि हम इन विषयों को गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो ये जो मानसिकता में सरकारी नौकरी बैठ गई है, उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और जहां तक आईआईएम का ताल्लुक है, आई थिंक with each changing day you will have a new mandate now. The mandate of IIM will no longer be to produce managers and executives for national and multinational companies, but to produce startups who can add value to their work through the managerial skills that they have picked up in the IIM. Because the gap between the private and public sector is vanishing away. और इसको किस प्रकार से हम ऑप्टिमम गोल्स तक पहुंचाएं, उसके लिए अनिवार्य है सस्टेनेबिलिटी, जिसकी ओर डॉक्टर मिलिंद ने इशारा किया। और सस्टेनेबिलिटी के लिए अनिवार्य है वाइडर इंटेग्रेशन। और ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं, महामीन जी के भी ध्यान में आएगी कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जैसे एलजी साहब ने इशारा किया, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मुझे लगता है कि हर प्रकार का उच्च शिक्षा का संस्थान उपलब्ध है। आईआईएम तो है ही है, आईआईटी है, IIIM CSIR है, एम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन है, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तर भारत का पहला स्पेस टीचिंग सेंटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। पिछले साल मैंने एक सुझाव दिया था और शायद एक MOU भी हस्ताक्षरित किया गया इन सब इंस्टीट्यूट्स के बीच में। यदि हम इन सब को जोड़ करके एक सिनर्जिज्म के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड प्रोफेशन का जमाना आ चुका है, वी कांट गेट अवे विद इट। इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स एन एसेंशियल नेसेसिटी फॉर ईच वन ऑफ अस। अब उदाहरण के तौर पर इसी स्थान के 3 किलोमीटर दूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन CSIR है, जो मेरे विभाग से संबंधित। ओरोमा मिशन का वहां प्रारंभ हुआ और देश में जिस पर्पल रेवोल्यूशन का उल्लेख किया जाता है, पर्पल क्रांति, उसका वो जन्म स्थान है। क्यों नहीं हम उसका भरपूर लाभ ले पाते? अगर हमारे मैनेजमेंट स्किल जुड़ जाए, इंजीनियरिंग स्किल जुड़ जाए, और जिन्होंने उसका लाभ लिया है वो लाखों की आमदन कर रहे हैं। लेवेंडर, अरोमा स्टार्टअप्स, एग्रीटेक स्टार्टअप्स। भारत में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, एक एग्रीकल्चर, दूसरा डेयरी। क्योंकि हमारे मन में अभी भी बैठा है कि एग्रीकल्चर का अर्थ है वो 2 बीघा जमीन का किसान, परंतु आज का किसान इज एग्रीटेक स्टार्टअप, और उसका भरपूर यहां पर रिसोर्स अवेलेबल है। इस संस्थान के माध्यम से उसके लिए सहयोग दिया जा रहा है। यदि IIM, IIT और एम्स इसके साथ जुड़ जाएं तो वैल्यू एडिशन होगा। साथ ही साथ डेयरी सेक्टर का यहां पर बहुत साधन है। हमारा ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी का सहयोग दे रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू। आपको जानकर के थोड़ा अचंभा भी होगा, बाद में घर जाकर के शायद सोचना भी पड़े।
2 बच्चे बीटेक की नौकरी छोड़ करके और एक एमबीए किया हुआ बच्चा बेंगलोर से नौकरी छोड़ करके हमारे डेयरी स्टार्टअप का हिस्सा बना है। यहीं से 10 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया है। वो पूरा सहयोग सरकार की ओर से दिया गया है। कहने का अर्थ ये कि मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के अनेकों प्रावधान और अनेकों स्कीम्स, योजनाएं उपलब्ध हैं। एंड टू दैट एक्सटेंड आई कैन से दैट IIM Jammu has happened at the right time. And those of you who are graduating today are actually the men and women at the right place at the right time. क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं अमृत महाकाल, अगले 25 वर्ष, ना मालूम हम में से कितने रहेंगे ना रहें, but you have active 25 years to put in. Now the challenge is how best you avail of this opportunity. And if you succeed in availing it, it is you who will have the privilege to say, when India turns 100, जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो आप ही हैं जिनको कुदरत ने वो नेमत बख्शी, that you can look back and say, look here, we are also the architects of India at 100. So if you're looking forward to 2047, I think you will have to plan not for today or tomorrow, for India at 2047, because you are going to be the active operators which would lead India to its pedestal of 2047. Once again, thank you very much, and I'm glad to be here. Thank you, sir. IIM Jammu proposes to start a diversity cell for the SC and ST community in IIM Jammu with the support of the Confederation of Indian Industries, the CII, and the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industries, the DICCI. The diversity cell aims to promote entrepreneurship in this segment of society for their economic and social upliftment. May I now request the Chief Guest, the Honorable President of India, to kindly inaugurate the diversity cell. Keeping up with the tradition of uplifting the marginalized and promoting entrepreneurship among the youth, IIM Jammu, in association with Vicky and CII, proposes to start Diversity Cell in the Institute. The Diversity Cell is IIM Jammu, Vicky and CII joint efforts of affirmative action that aims to promote and mainstream entrepreneurship among SC, ST and other vulnerable sections of the society for their economic and social upliftment. The idea of the Diversity Cell is primarily to build capacities of SC/ST entrepreneurs of the region in any or every aspect of setting up and running a business by tapping into the expertise of IIM Jammu faculty and partners. IIM Jammu's Diversity Cell will benefit from the Institute's existing state-of-the-art business incubator setup in providing incubation services to these vulnerable communities, apart from taking advantage of the various schemes launched by Government of India for these communities, pertaining to inputs from the experts, marketing assistance, testing fee reimbursement, bank loan processing, etc. The cell will also enable access to capital, technology and markets. The Diversity Cell will also tie up with national laboratories and institutes seeking commercialization of their patents and seek support from venture capitalists to give special attention to entrepreneurs from these communities. Thank you. Thank you, sir. May I now request the Chief Guest, the Honorable President of India, to kindly award medals to the first, second and third rank holders of the Master of Business Administration. Are the dignitaries on the dais? May please join.
The chairperson MBA's bronze medal is given to that student who has obtained the third high, and the MBA bronze medal goes to Rafiq Davra. The Director's Silver Medal is given to that student who has obtained the second highest CGPA in the MBA program in Management. And the Director's Silver Medal goes to Shraddha Shukla. The Chairman Board of Governors Gold Medal is given to that student who has obtained the highest CGPA in the MBA program in Management. The Chairman's Gold Medal goes to Sonali. Thank you, sir. Congratulations to all the three ladies for making IIM Jammu proud. May I now have the privilege to invite the Chief Guest, the Honorable President of India, to deliver the annual convocation address. Minister of State in the Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh Ji, Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha Ji, Chairman of the Board of Governors of IIM Jammu, Dr. Milind Kamble Ji, Director, Professor B.S. Sahai Ji, dear students, faculty and staff members, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be with you all today, as this convocation is a landmark event in the lives of the bright young students who have earned their degrees and medals today. I congratulate the students for their achievements. I also congratulate the parents and teachers who have toiled hard to witness this day, which is so important in the lives of these young students. I attach great importance to this event, as it is directly related to the future of our talented youth and thereby to the future of India. Only yesterday, I interacted with many vice chancellors of central universities and directors of institutions of national importance in the presence of the Union Minister of Education and experts of higher education who are responsible for implementing the National Education Policy 2020 and other related measures. The occasion was the Visitors Conference held in the Rashtrapati Bhavan. Ladies and gentlemen, education is the greatest enabler. The future of our country depends on good education of our young population. Therefore, I try not to miss any opportunity that is related to promotion of education. I remember having participated in virtual mode at the Conference on Implementation of the National Education Policy in Jammu and Kashmir
way back in September 2020. When the Lieutenant Governor Sri Manoj Sinha ji requested me to participate in that conference, I had happily agreed. Many of you may be aware of the fact that the Lieutenant Governor came into the field of public service with an illustrious academic career as an engineering student from IIT BHU. On a lighter note, the Lieutenant Governor is also described as a dhoti-wearing IITian by his friendly associates. I appreciate his efforts for improvement of education in Jammu and Kashmir. Coming from this region, Dr. Jitendra Singh ji has been closely involved with the overall development of Jammu and Kashmir, along with his responsibilities in the central government. The presence of Dr. Milind Kamble here, who is also the founder chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, that is DICCI, is a good example of convergence between academia and industry. I appreciate the team of IIM Jammu, led by its director, for taking the institute forward in line with the educational objectives of the nation. Ladies and gentlemen, as we know, the national education policy seeks to position India as a knowledge hub in today's knowledge economy. It seeks to make our youth equipped for the world of 21st century while preserving our ancient values which remain relevant even today. For India to become a global knowledge hub, our institutes of learning have to be globally comparable. With this perspective, a presentation was made on global ranking of higher education institutions at the Visitors Conference I mentioned about. I am happy to note that the number of Indian institutions in the global ranking is gradually increasing. I expect new institutions like IIM Jammu to quickly adopt global best practices and aspire for higher ranking. Ladies and gentlemen, we are in an era of enterprise, innovation and value creation. I have been informed that innovation councils have been set up in higher education institutions in almost all the states and union territories. India's ranking in Global Innovation Index has improved from 76 in the year 2014 to 46 in 2021. Innovation and entrepreneurship strengthen each other. Aided by convergence of technologies and opportunities, many startups have become very successful and are being described as the emerging mainstay of the Indian economy. Unicorns, which are startup enterprises with market valuation of $1 billion and above, are proving to be game changers. These unicorns, most of which are set up by our young people, must be a source of inspiration for you all. The mindset of being a job giver and not a job seeker among the youth of India is one of the key factors in our country having one of the best startup ecosystems in the world. I feel very happy to note that IIM Jammu, in collaboration with DICCI and CII, is going to set up a special diversity cell for helping potential entrepreneurs from scheduled caste and scheduled tribes. I am also told that this is going to be the first center of its kind among the IIMs. I appreciate everyone concerned with the initiative to promote entrepreneurship and inclusion. Ladies and gentlemen, the establishment of IIM Jammu in 2016 marks the beginning of a new chapter of higher education in this area. I am sure that this institute will soon emerge as a major education destination for students from different parts of the country and even from other countries. I am glad to note that students from 25 states and union territories
are receiving education from the faculty drawn from all over the country. This makes IIM Jammu reflect a young mini India. I am told that adjunct faculty from countries like the UK, France, Brazil and the US are associated with IIM Jammu. I am also happy to note that the institute has tied up with 15 prestigious institutions in the US, France, Australia, Korea and the UK for student and faculty exchange programs. I have been told that the new campus of the institute is targeted to be fully functional by November this year. I extend my best wishes for the team here to achieve the target. I am also happy to know about the steps taken to develop Srinagar off-campus of IIM Jammu. That will further increase the higher education outreach in this part of the country. Ladies and gentlemen, I am glad to note that the educational ecosystem of this area is getting stronger by cooperation among the Jammu-based IIM, IIT and AIMS. I am also happy that these three institutes are integrating and offering courses in which students from one institute can get access to the other. IIM Jammu has been offering dual degree program with IIT Jammu. It is also starting MBA programs in interdisciplinary areas with IIT Jammu and AIMS Jammu. This integration of courses and institutes is in line with the objectives of the National Education Policy 2020. I am told that other higher education institutions have been asked to emulate this initiative taken by these institutes. I appreciate IIM Jammu and the other two national institutes here for taking lead in this important area of synergy. Ladies and gentlemen, as we know that the United Nations has been publishing a World Happiness Report along with the ranking of countries on happiness-related parameters. In a world full of stress, happiness is as much about the spirit of the person as it is about external conditions. Therefore, right training of people in the art of happiness is as important as their training in skills and professions. In this context, the initiative of setting up a Center for Happiness named Anandam by IIM Jammu is a welcome step. India has the largest pool of young talent in the world. Institutes like IIM Jammu are nurturing our youth. These talented young people are going to build the India of the future. They are going to make the lives of the people better and the country stronger. During my interaction with chancellors, vice chancellors and representatives of universities, I have always emphasized that institutes of higher education should take moral responsibility of developing some villages or towns in the proximity of the campus on the lines of corporate social responsibility. I urge your institute and other institutes in your proximity to adopt towns and villages of the neighborhood and channelize the potential of the people there for bigger goals, be it in the field of entrepreneurship or research or skill development. My dear young friends, as you move out of this institute as young professionals, you are going to witness many new dimensions of life. Try to make the positive aspects of what you see as an integral part of your approach to work and life. Education and knowledge remove ignorance and set the mind and soul free. This has been beautifully described in your institute's logo, which mentions the words Sa Vidya Ya Vimuktaye. It means only that learning is real learning which liberates the learner. This liberation is from ignorance, negativity and inertia. As you step into the world of professional excellence and move from one place to another, I urge you to always remain connected with your roots.
Never fail to give back to the society which has given you the opportunity to become a successful individual. A very important point for all of you is to remain quick learners and relearners throughout your life. The role of fast-paced technological changes is going to be disruptive. The shelf life of technologies is getting shorter. Therefore, the shelf life of management and leadership styles is also going to be shorter. To deal with such a scenario, you have to move from the mindset of utilizing the known to the approach of exploring the unknown. You have to move beyond your comfort zones to the areas of uncertainty. You have to convert challenges into opportunities. You have to pro-changers and yet to sensitize to no-changers for converting them as supporters of change. You have to look at tomorrow while learning from yesterday. You have to create your future based on the relevant learning from the past. Ladies and gentlemen, you have to develop and retain a holistic approach to life and work. For that, you may have to blend what appear to be opposites. For example, you have to blend compassion with firm decision making. You have to blend competition and team building. You have to keep a sharp eye on the mega trends and micro trends. You have to think global and act local. This is the real essence of the mission of making Atmanirbhar Bharat. I suggest that you keep an open mind, an open heart and a strong will. Most importantly, I wish that you do well by doing good. I strongly believe that a really good entrepreneur, good manager or a good business leader is one who believes in doing well by doing good. Excellence and ethics go together. My dear young students, I once again congratulate the recipients of medals and degrees today. I am delighted to see that all the 3 medal winners in today's convocation are our daughters. I think they deserve your applause. As we know that in the latest results of the civil services examination released recently, our daughters have captured the top 3 ranks. These happy developments related to the excellence of our daughters indicate that India is moving not only towards greater women empowerment, but also towards women-led empowerment. I hope that each one of you would strive to make our nation proud and make positive contribution in the development of the society and the nation. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. May I now request the Chairman, Board of Governors, to formally announce the closing of the convocation. I declare the convocation closed. Thank you, sir. May I now request all of you to kindly rise for the national anthem. Road. 1, 2.